डॉक्टर साहब, एक बड़ा मिथ ये है कि कैंसर का मतलब है एंड ऑफ लाइफ। आप इस मिथ को कैसे टैकल करते हैं? Cancer is not incurable. Cancer is curable, and cancer is like any other disease. आजकल के पेशेंट्स और फैमिलीज गूगल पे सर्च करते हैं, क्या कैंसर का अर्ली डिटेक्शन सही में जान बचा सकता है? इस पर आपका क्या प्रैक्टिकल व्यू है? Information is important, but information from the right source is the most important. important. Your doctor is most probably the best source of authentic information. सो डॉक्टर साहब, क्या कुछ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो रेगुलर बेसिस पे लोगों को कराने चाहिए जिनसे कैंसर का अर्ली डिटेक्शन पता चल सके? फॉर एग्जांपल मैमोग्राफी, पैप स्मेयर, कोलोनोस्कोपी, लो डोज सीटी फॉर लंग्स। और आप कौन से टेस्ट को मस्ट डू सजेस्ट करेंगे जहाँ पे लोग एक हायर जो एज ग्रुप है वहाँ पे मस्ट होना चाहिए? My suggestion is that if you are above 40 or 45, maybe an annual health checkup is something That's mandatory, yeah. which you should be able to, if not every year, maybe an alternate year. कीमो लेना है या इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, एज यू सेड अर्लियर? सो कैसे डिसाइड करते हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को? हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Targeted therapy is a particular type of anti-cancer therapy which acts on a particular target Right. on the cancer. सीमन आपने प्रिजर्व किया, सो दैट इज अ लाइक अ कंडीशन बिफोर द Before we start treatment. या Before we बिकॉज start. आफ्टर दैट तो वो बहुत डिग्रेड हो जाएगा। No. Before we start treatment, semen preservation actually is a very small procedure. It's not Right. that difficult. डॉक्टर साहब, रेमिशन के बाद भी काफ़ी लोग एंग्शियस रहते हैं, क्या वापस हो सकता है? दे फियर ऑब्वियसली बिकॉज इट कैन कम बैक एनी टाइम। सो आप कैसे हेल्प करते हैं पेशेंट्स को पोस्ट ट्रीटमेंट एंग्जाइटी से कोप करने में? मेडिकल लैंग्वेज में इसका एक नाम है डेमोक्लिस सिंड्रोम। डेमोक्लिस एक बंदा था जिनको भगवान ज्यूस ने श्राप दिया था कि वो कभी भी झूठ बोलेगा उसके सर के ऊपर वो तलवार जो है मंडराता है वो गिरेगा। सो दिस फियर ऑफ रिकरेंस, इट्स कॉल्ड डेमोक्लिस सिंड्रोम। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू द वाइटल वॉइसेस। मैं हूं आपकी होस्ट शिखा सुराना और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपर्ट के बारे में जिन्होंने कैंसर की फील्ड में नए स्टैंडर्ड सेट किए और दुनिया के सामने सोर्स ऑफ होप की तरह सामने आए। डॉक्टर दीपांजन पांडा, द सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर दीपांजन पांडा। डॉक्टर पांडा, आपका कैंसर ट्रीटमेंट के सफ़र कैसा रहा और क्या कोई पर्सनल इंस्पिरेशन थी या फिर कोई टर्निंग पॉइंट? Thank you, Shikha ji, for inviting me for this podcast. Yes, like many of my colleagues, I had a very traumatic personal incidents. In fact, when I was 10, I lost my mother to breast cancer. Oh my God. And that day I thought I would become a cancer specialist. In fact, I wanted to become a cancer doctor before I could spell the word cancer. Oh my goodness. But looking back, I'm sure that inspired me, and my mom's blessings must be there, because coming from Kolkata, studied in a vernacular medium school, I went all the way to All India Institute and then to Harvard, and this would not have been possible with blessings of so many people. Definitely. I think that was the biggest turning point when you lose your mother. Yeah, I tell my students that to become a complete oncologist, you need 3 sides. Now, one side is bedside, that is your clinical acumen, and that everybody should have. Bench side is the other side, that is research. So I wanted to have that exposure. That's why after my DM from All India Institute, I got this research fellowship at Brigham and Women. And I grabbed that because I wanted to that perspective of research so that I can come back and do some translational work. But the third side, which is the other side, that not all physicians have. And believe me, Shikha ji, unless you sat on the other side, you are not a complete physician. You do not know the emotional turmoil the patient and their relative goes. Families go through. So I am not saying that everybody should have that. Yeah. But I think that some way make me a more complete physician and human being. That's wonderful.
डॉक्टर, जब आप एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का मतलब एक मेडिकल रिकवरी है या इससे कुछ ज़्यादा भी? That's very important question. For any physician and especially for a cancer specialist, an oncologist, only a physical recovery is not enough. कैंसर ये सिर्फ बीमारी नहीं है, जी, ये एक तरह का एक खौफ है. इनफैक्ट हमारे जो टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन था हैरिसन्स, उसमें जो ऑन्कोलॉजी हेमेटोलॉजी चैप्टर उसमें लिखा रहता है, जी एक बंदा जिसकी हार्ट फेलियर हुआ है और वो चलते फिरते सांस फूल रहा है, एक बंदा जिसकी लीवर फेलियर है, उसके पेट में पानी जम रहा है, एसाइटिस है, और एक पैनक्रियाटिक कैंसर, दे विल मोस्ट प्रोबेबली लीव फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. बट जब हार्ट और लीवर वाले मरीज वो सोचते हैं मैं तो ठीक हो जाऊंगा, द कैंसर पेशेंट इज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ डेथ. सो ये जो फियर है, दूसरा जब ट्रीट हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर भी उनके अंदर एक डर काम करता है. तो एज ए फिजिशियन it is my duty to see that he is probably properly integrated back into the society. उनको मैं हमेशा बोलता हूँ तो डर के ऊपर जीत पाना है. हाँ. डर के आगे जीत है. एब्सोल्युटली. डॉक्टर साहब, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपके ट्रीटमेंट मॉडल का एक इंटेग्रल पार्ट है. इस होलिस्टिक अप्रोच के पीछे क्या सोच हो सकती है? थैंक यू शिखा जी. एज यू नो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक डर है. और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जब मरीज़ इसकी डायग्नोसिस होता है तब वो डरता है, वो ठीक नहीं हो पाएगा. देयर इज़ अ फियर ऑफ डेथ, देयर इज़ अ फियर ऑफ पेन, देयर इज़ अ फियर ऑफ सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन. और जब वो ठीक भी हो जाता है तब उसकी और डर रहता है, क्या वो सोसाइटी में रीइंटीग्रेट हो पाएगा, क्या उसके फैमिली मेम्बर्स उसको उतने ही प्यार करेंगे, क्या उसका चेहरा ख़राब हो गया, हाँ, क्या वो उतनी प्यार मोहब्बत मिलेगा उसको सोसाइटी से. एंड देयर इज़ ऑल्सो फियर ऑफ लूजिंग जॉब. सो एज ए फिजिशियन, एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड एज ए फेलो ह्यूमन बीइंग, इस जर्नी में हमें पेशेंट के हाथ पकड़ने पड़ते हैं, उसको समझाने पड़ते हैं, उसको उस डर से उसके डर का इलाज करना पड़ता है. एज यू नो दैट पॉपुलर एड से डर के आगे जीत है. डेफिनेटली, बिकॉज एज फार एज आई सी कैंसर, जहाँ पे फिजिकली आपको जितना प्रॉब्लम हो रहा है, मेंटली भी उतना ही प्रॉब्लम है ये. हाँ, और जो लोगों की फैमिली सपोर्ट अच्छे होते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, वो हमेशा अच्छा करते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट. You should have family around so that they uplift you. Yes, absolutely. आपको उसको अलग रखना नहीं है. इनफैक्ट मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ. एक around 75-year-old man, one came to my office and he had lung cancer. जब मैं उनको बीमारी के बारे में समझा रहा था तो he just stopped me and said, डॉक्टर साहब, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मेरा एक 5 साल का पोता है, वो मेरे साथ सोता है, तो क्या ये छुआछुई वाला बीमारी है, क्या मेरा पोता को वो अलग कर देंगे. दैट ओल्ड मैन वॉज नॉट afraid of dying, he was afraid of getting isolated from his family. So as a physician you need to see that. That is equally important than giving him chemotherapy or any other. डेफिनेटली, डेफिनेटली. डॉक्टर साहब, आजकल के पेशेंट्स और फैमिलीज गूगल पे सर्च करते हैं, क्या कैंसर का अर्ली डिटेक्शन सही में जान बचा सकता है? इस पर आपका क्या प्रैक्टिकल व्यू होगा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिखा जी. देखिए, कैंसर का अर्ली डिटेक्शन जान बचा सकता है. एज फार एज गूगल इज कंसर्न, गूगल इज अ सर्च इंजन and it works on some algorithm which is obviously we do not know, that is their proprietary. Now the problem is it is a treasure trove of information, but सारे information जो इंटरनेट सर्च पे आता है वो हमेशा सब सही नहीं होते, कोई आधा सच भी होते हैं. So information is important, but information from the right source is the most important. And in that case my personal suggestion is that your doctor is most probably the best source of authentic information. Definitely, definitely. So I always tell my patient that if you want to read this, that, and not random search, because that sometimes cause more anxiety than actual truth. Exactly, because it's half truth. Exactly. Yeah.
सो डॉक्टर साहब, क्या कुछ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो रेगुलर बेसिस पे लोगों को कराने चाहिए जिनसे कैंसर का अर्ली डिटेक्शन पता चल सके? फॉर एग्जांपल मैमोग्राफी, पैप स्मेयर, कोलोनोस्कोपी, लोज डोज सीटी फॉर लंग्स। और आप कौन से टेस्ट को मस्ट डू सजेस्ट करेंगे जहाँ पे लोग, एक हायर जो एज ग्रुप है वहाँ पे मस्ट होना चाहिए? Thank you, Shikha ji. This is also very important. So basically we are talking about screening test. Right. Now screening test जो हमारे medical text में पढ़ाया जाता है, it should be a very highly sensitive, specific and prevalence to the particular society. तो उस कैंसर एक गुड नंबर्स में उस सोसाइटी में होना चाहिए. नाउ प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द कैंसर इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज़ नॉट वेरी हाई. इंडिया इज़ 140 करोड़ की देश है. सो हमारे कैंसर्स की नंबर ज़्यादा है लेकिन परसेंटेज के हिसाब में बहुत ज़्यादा नहीं है. सो प्रॉब्लम क्या होता है कि मेजर स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट very cost effective in our country. So ICMR, unlike American Society College of Oncology and American Cancer Society or United States Preventive Force for Cancer, इन लोगों के unlike them हमारे ICMR और Indian Council of Medical Research रूटीन स्क्रीनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा एडवोकेसी नहीं करते. What we rather call is the chance screening. दैट जब भी आप फिजिशियंस के संपर्क में आते हैं आप एक बार स्क्रीन करा लीजिए, चेक करा लीजिए अपने आप को. इस बारे में जैसे इन यूएसए इन फीमेल हु आर मोर देन 40-45 ईयर्स ऑफ एज, हम बोलते हैं वो ईयरली या ऑल्टरनेट ईयर एक मैमोग्राम कराए, which do help in getting cancers early. Right. But whether in a country like ours that will become cost effective is not proven. Similarly, जो pap smear is a very important low cost diagnostic material to diagnose cervical cancer, जो जरायुमुख की कैंसर है. And generally we suggest according to in US study that अब 21 साल के ऊपर हो तो अब हर 3 से 5 साल में एक बार वो टेस्ट करा लीजिए. बट प्रैक्टिकली हमारे देश में वो फिजिबल होते नहीं हैं. तो जनरली माई सजेशन इज दैट इफ़ यू आर अबव 40 or 45, maybe an annual health checkup is something which you should be able to, if not every year, maybe an alternate year. So that is something I would suggest if it is possible. Definitely, sir. डॉक्टर साहब, काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, एंड व्हाट इज़ द सिंपल एनालॉजी टू दिस? थैंक यू शिखा जी. हमारी समस्या ये है कि हमारे पढ़ाई लिखाई में ना बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश एंड लैटिन वर्ड्स आ गए हैं जी जी, विच मेक्स इट अ लिटिल इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू कॉमन पीपल. डेफिनेटली. Oncology means study of cancer. Oncos is a Latin word, means tumor, and logos comes from knowledge. Okay. Like zoology is a zoo is animal and logos is knowledge. Yes, for sure. And surgical oncologist are person, they are surgeon who exclusively treat cancer, the tumors. So they are the surgical specialist in removing tumors. Similarly, a radiation oncologist are a cancer specialist who are specializing in treating cancer with radiation therapy. You know, Röntgen first discovered X-ray and later on it has become an important tool in treating cancers. Similarly, medical oncologist are person like me who treats cancer by means of chemotherapy. True. And if you can add targeted therapy, immunotherapy, we Definitely, also do definitely. stem cell transplant, जिनको common आदमी bone marrow transplant करते हैं. So इनमें and but cancer treatment is more than that. The pathologist who is diagnosing the cancer, the radiologist who is actually with this X-ray or CT scan or MRI is giving us exact idea about the disease. They are all
part of the There are treatment. different sections actually. Cancer Yes. is proper big Yes, thing. there's a 360 degree. So there are 360 many degree, yes. specialists who are involved in the management. Yeah, it's just not one thing. It No, has to be a total absolutely. package. And without one, other cannot work. Cannot be, right, true, absolutely. So डॉक्टर साहब एक और कॉमन क्वेश्चन है मेरे पास, कीमो लेना है या इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी एज यू सेड अर्लियर. सो कैसे डिसाइड करते हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? थैंक यू शिखा जी. मैं अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री बताऊँ, ये जो केमोथेरेपी वर्ड है इसके लेकिन कैंसर इलाज के साथ शुरू में कोई संबंध नहीं था. इन 1900s देयर वाज अ ग्रेट जर्मन केमिस्ट कॉल्ड पॉल अर्लिक who first coined this term chemotherapy, which literally means treatment by chemical. He first told that bacterial infection, which was very very important that time, जब कोई antibiotics था नहीं, तो bacterial infection can be treated by chemical agent. In fact, the पहला antibacterial agent Prontosil, डोमैक करके और एक जर्मन केमिस्ट दिया था, वो एक डाई फैक्ट्री का केमिकल से बना था. And around before antibiotic came, like penicillin, which was the first antibiotic, this was Prontosil was the first antibacterial treatment. It was a sulfur drug and quite toxic. Once antibiotic came with the penicillin, which is a drug from a fungus called Penicillium notatum and chrysogenum, discovered by Alexander Fleming. तब पता चला कि एंटी फंगल में फंगस से बैक्टीरिया आप ट्रीट कर सकते हैं. तब बाद में वो वर्ड आया एंटीबायोसिस और एंटीबायोटिक, जिसमें एक बायोलॉजिकल एजेंट से आप दूसरे बायोलॉजिकल एजेंट को ट्रीट कर रहे हो. By the end of Second World War in Yale University, people started understanding that nitrogen mustard, which was a weapon used for chemical weapon used in Second World War to kill people, has the potential to treat some drug disease like lymphoma. That was the era जब से केमोथेरेपी टर्म कैंसर ट्रीटमेंट के साथ अंगांगिक रूप से जुड़ गया. And but from the chemotherapy, many of the chemotherapy, in fact many of them are actually plant products, like paclitaxel करके एक ड्रग है जो हम ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर में यूज़ करते हैं. वो एक टैक्सस ब्रेविस और पैसिफिक यू ट्री से आता है. विनक्रिस्टीन और विनका अल्कलॉइड, ये रात की रानी जो फ्लावर है उससे बनता है. यस. नाउ कमिंग टू targeted therapy, targeted therapy by its name, it targets a specific receptors or a mutation in our body. Like lung cancer के एक म्यूटेशन होते हैं काफ़ी कॉमन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर और EGFR. उनके अगेंस्ट में देयर इज ए ओरल टैबलेट कॉल्ड जेफ्टिनीब एंड आर्लोटिनीब एंड ओसिमार्टिनीब. ऐसे बहुत सारे टारगेट्स हैं. जैसे देयर इज सम पर्टिकुलर टारगेट्स कॉल्ड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स. इनके अगेंस्ट में कुछ प्रोटीन्स है जो इनको ब्लॉक करके कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं. सो बाई देयर ए ब्रॉड ग्रुप ऑफ ड्रग्स, बट in a nutshell, targeted therapy is a particular type of anti-cancer therapy which acts on a particular target on the cancer. Whereas chemotherapy is a broad, all destructive sort of treatment. वो basically chemotherapeutic drugs work by stopping the cell division. So it stops cancer cell division, but it also have some side effects on our body because normal cell का भी तो division बंद हो जाता है. Definitely. So you can say, if I can take a crude comparison, chemotherapy is like artillery fire, where targeted therapy is like a sniper rifle. Okay. Now coming to immunotherapy. Immunotherapy is a treatment where we use body's immune system either to enhance that or to modulate that. In fact, vaccine is the commonest example of immunotherapy. आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेते हैं जो अल्टीमेटली लिवर कैंसर कम कर सकता है. बट आजकल इम्यूनोथेरेपी की जो चर्चा हो रहा है वो ड्रग है इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स, जिसके लिए जेम्स एलिसन और प्रोफेसर होन्जो को नोबेल प्राइज़ मिला है. उसमें क्या होता है, वो बॉडी इम्यून सिस्टम्स को जागरूक करते हैं टू लुक फॉर कैंसर्स एंड किल देम. नॉर्मली कैंसर सेल्स इसीलिए बच जाता है बिकॉज दे प्रेजेंट टू आवर इम्यून सिस्टम as not a foreign agent but our own. And there is some interaction between cancer cells
and immune cells, especially T lymphocytes called PD1 and PDL1, Okay. जिसके चलते cancer cells presents to our immune system as our own, a process called immune evasion. Okay. Immune checkpoint inhibitor उस process को block करता है. So our immune system recognizes cancer cells as the foreign cells and kills them. It's a very sophisticated new findings, and in a way it has got a paradigm shift in a way we treat cancers. I think that was a lot of information. Very nice. So next question comes here, sir. Cancer diagnosis सुनते ही सबसे पहला reaction होता है shock and fear. ऐसे में आप एक डॉक्टर के रूप में कैसे हेल्प करते हैं पेशेंट और उसकी फैमिली को जो इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते ऑफ कोर्स? By remain truthful. या देखिए, हम प्रोफेशनल्स को ना बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना चाहिए, जी बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ बोलना भी नहीं चाहिए, जी लेकिन छुपाना भी नहीं चाहिए. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो हाउ व्हेन यू एक्चुअली गिव देम द ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन, पीपल टेक इट राइटली. ट्रूथफुल होना मतलब डराना नहीं है. ट्रूथफुल होना मतलब सच के सामना करना जी और उनको समझाना कि इलाज हो सकता है और उस जर्नी में आप उनके साथ हो. राइट. So you need not to be, Shikha ji, my experience is that you need not to be the smartest, you need not to be the more daredevil. You need to be someone who seems sincere, राइट. truthful, and with all humility या help them and Yeah. genuine. या डरे हुए लोग आते हैं, वाओ. उस डर का सामना करना है, उनको रास्ता दिखाना है और मेरे ख्याल से सच के साथ चलना है. आई थिंक जब आपके पास डॉक्टर साहब कोई आता होगा उसको पता चलता है कि मुझे कैंसर है जैसी कोई चीज़ है, आई थिंक आप उनको एक गॉड से कम नहीं लगते हैं उस टाइम कि यार दिस इज़ द पर्सन हु कैन सेव मी. वेल वी This ट्राई is टू the- अवॉइड दैट. मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूँ और आजकल मरीज को भी बोलता हूँ, मैं Yeah. भगवान नहीं हूँ. Yes, आई एम जस्ट अनदर पर्सन विथ सम स्किल सेट. definitely. उसमें क्या होता है ना शिखा जी, कभी कभी बार बार सुनते सुनते आपको खुद को लगने लगता है आप जी. गॉड हो. आप नहीं हो, आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते. तो मैं और भी एक, आई एम जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग विथ ऑल इमोशंस, and sometimes patient emotions also affects us. जी. It is sometimes a difficult journey, Yeah. but when you feel low, you just think of in some people's life you made some changes, positive changes, and carry on. डेफिनेटली. डॉक्टर साहब, आपने कौन से ऐसे पेशेंट्स देखे जिन्होंने इम्पॉसिबल रिकवरी जर्नी तय की, और क्या कोई कहानी है आपके दिल में कोई स्पेशल ऐसी जिसके बारे में आप बताना चाहें, कोई ऐसा स्पेशल पेशेंट? Well, you know, we have some success and some failure. Sometimes it touches you. So I remember there was a 14-year-old boy with acute lymphoblastic leukemia. He's from a very poor patient. Family, yeah. And it was my initial patient in Apollo when I joined. That's okay. Now he came very sick, and we almost thought that he will not make it. Okay. But his father was one who never lost hope, Yeah. and he had full faith on us, Wow, more that's- than I that's- think I had on myself. That's wonderful. Wonderful. Actually, that's the best part from a parent. And I'll say thank God Yeah. that boy made recovery. So it's Wow. been almost 10 years. He's now having job. Is coming regularly still, and we now chat. He's healthy. So when I look at him, I have a quiet sense of satisfaction, Yeah. which I think only a physician can have. Yeah. Looking at that, you have made some differences with the help of God and many other people. Definitely. With his life. डॉक्टर साहब, यंग एडल्ट्स के लिए कैंसर डायग्नोसिस एक अलग तरह का ऑब्वियसली एक ट्रॉमा होता है बिकॉज दैट्स अ वेरी यंग एज. सो कैरियर, रिलेशनशिप्स, फर्टिलिटी, आप इस एज ग्रुप को क्या स्पेशल गाइडेंस देना चाहते हैं? Yeah, so that's a real big issues, real Yeah, difficult issues yeah. for male or female. Yeah. So when
many of the cancer drugs also can have a potent risk of infertility. And most of them are getting cured and getting back to society. So they have this problem. So like young males or females, when they come with a diagnosis of malignancy, if time permits, we try to preserve their semen or ova. Okay. And we explain them about risk of infertility, but we also tell them that that is only part. So it is only about the fertility. The potency ka use nahi hota. So they can get married, they can have all the normal things in life. But since sometimes post treatment there is 5 to 10% chance that their sperm counts may become low, so this cryopreservation of sperm works. So like if I ask you, sir, जैसे semen आपने preserve किया, so that is a condition before you start treatment. Yeah, before you because start. after that तो वो बहुत degrade हो जाएगा. No. Before you start treatment, we semen preservation actually is a very small procedure. It's not that difficult. Yeah. A little more difficult is to oocyte preservation or embryo, if there is or embryo preservation. That takes a little more time. Now you have to take a call. If you think the patient is too sick to delay about 2 weeks, 3 weeks, you explain them and you start. And believe me, there is no qualms. If I have to think between the survival of a person and his other conditions, the survival will get the first priority, and family also understands. So you need to have a very clear-cut idea what you are dealing with. Now, once he gets cured, sometimes they have a mutilating surgery. So getting back his confidence is very, very important. And even during treatment, patient feel low, that my husband will not like me, my wife thinks I am no good. Then I sometimes have a one-to-one discussion and say, see, people who matter doesn't mind, and people who mind doesn't matter. Definitely. So that's a very important thing. And actually, in this difficult time, you realize who are actually people who cares for you. And believe me, so ultimately, too many people doesn't matter. That gives you another perspective. And most probably, treating them, you get that perspective. I learned a lot from my patient. Definitely. That in face of real adversity, how they keep their calm, how they are focused. They can even sometimes laugh and make jokes. So, I mean, I think more than I treat my patient, I learn from them. That's a beautiful thing. डॉक्टर साहब, एक बड़ा मिथ ये है कि कैंसर का मतलब है एंड ऑफ लाइफ. आप इस मिथ को कैसे टैकल करते हैं? Oh, that's the greatest lie ever. Yeah. As I told you, but this is such a prevalent thing, and as I told you in my textbook of medicine also. So my whole life mission is to explain to my patients that cancer can be like any other disease, like diabetes, hypertension. And in fact, our goal is to sometimes make cancer more of a chronic disease if we cannot cure it. Of course, we would like to cure, but if we not cure, we can make it a chronic disease where that patient can continue his work in daily life and his contribution to society like any other person's, while taking some support from us. So, cancer is not incurable. Cancer is curable. And cancer is like any other disease. When I was in class 10, there was a poem by Rudyard Kipling called If. And one of the line was, if you meet triumph and disaster and treat those two impostors just the same. So I say, you don't need to give cancer any special place. उसको कोई तवज्जो नहीं देना है. Just treat it. ठीक है, मेरे एक बीमारी हुआ है, उसको इलाज होगा, I'm ठीक. Just take it as any other disease. Yeah, okay. That's the best way, I think, that to tackle cancer. And it is true. You see, 20 साल पहले कैंसर्स की जो सिचुएशन था आज बिल्कुल अलग है. बहुत सारे कैंसर प्रॉपरली क्योर हो रहे हैं, लोग लंबे अरसे तक जी रहे हैं. आप देखिए, आप चारों तरफ देखिए, देयर आर मेनी कैंसर सर्वाइवर्स एंड दे आर गेटिंग बैक, इंटीग्रेटिंग बैक टू द सोसाइटी. Right.
डॉक्टर साहब, ऑर्गेनिक खाना, अल्कलाइन वाटर और होम रेमेडीज़ क्या कैंसर का इलाज हो सकते हैं? इस मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ आपका क्या मैसेज होगा? पहले मैं अल्कलाइन वाटर्स के बारे में बताऊं. देखिए हमारे बॉडी के ना ब्लड की एक पीएच होता है जो 7.4. नाउ एसिडिक और अल्कलाइन क्या होता है? द न्यूट्रल पीएच इज 7. सो एनीथिंग लेस देन 7 इज एसिडिक and anything more than 7 is alkaline. So body is slightly on alkaline side. But if you take too much of alkaline water, which mostly contains some minerals like calcium, magnesium, potassium, there is no strong evidence that it helps. Rather, I would say sometimes you can have an excessive electrolytes जो body को निकालने पड़ते हैं. You can have a kidney damage, heart damage. Seriously increasing potassium can lead to arrhythmia, heart failure. So as of now, I do not think there is any evidence that alkaline water improves cancer or treat cancers. Similarly, organic food may be good for your, as such, your health, but they are also very, very expensive, and there is no strong evidence that organic food is in a way superior to your normal foods. What I would suggest that eating a good amount of vegetables and fruits in your daily diet improves your health. But that is it. Similarly, once you have cancer, then you need to have a cancer treatment. Healthy living, healthy lifestyle is great, but बीमारी होने पर आपको बीमारी की इलाज लेना है. अल्कलाइन नहीं लेना. Alkaline water, I do not know. I don't have any evidence. I have read, and there has been. We need a much more larger trial to say. So sometimes without proper evidence, saying this causes more harm to the patient. Definitely. I recently met a patient who was by a greater YouTube influencer. He has stopped his prostate cancer treatment and went on some special diet, lost almost 20 kilo, now become bedridden. His disease has increased. I day before yesterday saw. So that sometimes you feel not the right thing is being done. You feel sorry actually. Yes. Okay. So Dr. Saab, immunity बढ़ाने वाले supplements, as we already talked, और diets के नाम पे market flooded है. क्या सच में कोई proven benefit है? देखिए, we need micronutrients like vitamins, minerals. Right. But if you have a healthy bits of fruits and vegetables, most of them work. Food supplement is a $1 billion market. Yes. There is no strong data. When you are having active cancers and you are not being able to take proper diet, sometimes supplements works. Like if you have a cancer of food pipe, you are not being able to eat, then we sometimes give you IV nutrition and everything. But otherwise, excessive food supplement is not known to have any extra benefit. If you can take a balanced meal, including a good amount of carbohydrate, protein, and fruits, vegetables, that's good enough. I don't think food supplement is that much of required. Yeah, true. डॉक्टर साहब, एक जैसे आजकल कोलेजन, आई वुड नॉट नेम एनी ऑफ देम, बट येस कोलेजन्स जैसे आजकल दुनिया इज़ लाइक ग्लूटाथॉन, विटामिन सी ले लीजिए, IV ले लीजिए, दिस ले लीजिए. तो डज दैट रियली वर्क इन सम वे? No, in fact, we have tried giving supra high dose of vitamin C and A in cancer treatment. Vitamin C is an important vitamin to improve your immunity. But आप रोज एक आंवला खा लीजिए, नींबू लीजिए, हरी मिर्च लीजिए, that gives you enough amount of vitamin C. Right. So I mean, if you, again I will reiterate, if you use a balanced diet, do a little bit of exercise and stay happy. Yeah. That is I think the best you can diet do. Actually. Best diet you can do. Okay. डॉक्टर साहब, आपके अनुभव में फैमिली और केयर गिवर्स का रोल कितना इम्पैक्टफुल होता है रिकवरी के लिए किसी के भी? Well, Shikha ji, as I have told you, I have already, this is the most important non-direct intervention factor. Right. जो पेशेंट्स के फैमिली सपोर्ट सॉलिडली उसके पीछे होता है, उसका रिकवरी हमेशा अच्छा होता है. पर इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ फॉर द केयर गिवर्स. यू सी केयर गिवर बर्नआउट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, स्पेशली पेशेंट हु आर हैविंग क्रॉनिक कैंसर प्रॉब्लम. सो सुबह से रात तक आप उनके सेवा में लगे रहते हो एंड आप खुद की तरफ नहीं देख पाते.
So that is not correct. In fact, इस बारे में I remember my नानी तो used to say, बेटा खुद को ठीक नहीं रख पाओगे तो दूसरे को कैसे ठीक रखोगे. So to all the caregivers, please take care of yourself. There is nothing wrong in taking care of yourself. Because आप ठीक ना हो, जैसे घर में मम्मी अगर ठीक नहीं रहती है तो घर थोड़ी चलता है. तो similarly, so the mother needs to eat on time, needs to take care of herself so that she can take care of others. So Definitely. this is for the caregivers. Definitely right. डॉक्टर साहब, आपका क्या एडवाइस आपको देना चाहिए केयर गिवर्स को जो कभी कभी खुद को भूल जाते हैं वाइल टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, एज यू ऑलरेडी सेड. सो इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे लाइक उनको भी रेगुलर टेस्ट, जैसे अब आप देख रहे हैं कि आपका पेशेंट घर में है, क्या उसके टेस्ट चल रहे हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डज दैट हेल्प? कभी कभी उसमें लोग डर जाते हैं. कई सारे लोग आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इनका कैंसर हो गया मेरे पिता, मुझे क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई ट्राई टू एस्यूएज देयर फियर. देखिए ऐसा है कि हेरिडिटरी कैंसर सिर्फ 5% होते हैं. अच्छा. यानी कि हाँ 5 से 10% से ज़्यादा हेरिडिटरी कैंसर नहीं होते. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर का कैंसर है या मदर का कैंसर है या ब्रदर का है आपको. सो एक तो वो डर से आप बाहर आइए. And then you need to find out if there is a very strong family history, like multiple close family members having cancer, then yes, we sometimes send them to genetic counselor, do a mapping, so that we can do some hereditary cancer screening, which is available. Okay. But it is not for everyone. So if you are suspecting that you have a strong family history, it is always good to talk to a genetic counselor or an oncophysician to plan for a screening test like that. Otherwise, जैसे मैंने कहा, आप डर के सारे जीते रहते हो, आप सुबह शाम डरे रहते हो, वो सही नहीं है शिखा जी. डर के साथ जीना सही नहीं है. अब सर आपकी बात से मुझे याद आ रहा है एंजेलिना जोली, उसकी शायद मदर को या आगे फैमिली में था, एंड उसके होने से पहले ही हाँ, एंजेलिना जी is a different issue. She was actually found to have a gene called BRCA. Exactly. Now BRCA gene has a very high risk of cancer. Yeah. इसमें ब्रेस्ट और ओवरियन कैंसर के रिस्क ऑलमोस्ट 40% बढ़ जाता है. तो व्हाट शी डीड वाज एन एक्सट्रीम. शी वेंट विद अ बायलैटरल ब्रेस्ट रिमूवल एंड ओवरी रिमूवल. नाउ यू कैन डू दैट. दैट इज कॉल्ड प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी and reconstruction. But sometimes we also so if the patient has say breast cancer, we found that she has a BRCA gene, then we sometimes discuss this whether she wants to do the removal of other breast and ovaries and fallopian tube, or wants a very close follow up. Okay. So we sometimes leave it to the patient. If the patient is very motivated, she can come for a regular follow up. But otherwise, sometimes yes, we offer. But that's a very small number of patients. Very less, I think. Very less. For the इसमें आपको proper counseling की ज़रूरत है, डॉक्टर से proper discussions की ज़रूरत है. Right. डॉक्टर साहब, रेमिशन के बाद भी काफ़ी लोग एंग्शियस रहते हैं, क्या वापस हो सकता है? दे फियर ऑब्वियसली बिकॉज इट कैन कम बैक एनी टाइम. सो आप कैसे हेल्प करते हैं पेशेंट्स को पोस्ट ट्रीटमेंट एंग्जाइटी से कोप करने में? इनफैक्ट हमारे मेडिकल लैंग्वेज में इसका एक नाम है डेमोक्लिस सिंड्रोम. डेमोक्लिस का सोर्ड था ग्रीक माइथोलॉजी में. एक डेमोक्लिस एक बंदा था जिनको भगवान ज्यूस ने श्राप दिया था कि वो कभी भी झूठ बोलेगा उसके सर के ऊपर वो तलवार जो है बन आता है वो गिरेगा. सो दिस फियर ऑफ रिकरेंस, इट्स कॉल्ड डेमोक्लिस सिंड्रोम. देयर इज नो ईजी वे आउट ऑफ इट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, nobody knows the right answer. But what we generally try is to frequently discuss this with our patient. We ask them the importance of regular follow-up. We tell them, well, there is a small chance that disease may come back, but not every day a disease is That's coming no back. Surety, actually. So I told them that while you take care of yourself, you live a healthy lifestyle, do a regular follow-up, but don't try to live in fear that it will come. जब तक नहीं आया तब तक तो नहीं आया ना. तो मत सोचिए at least. So we try to engage them with their family, with a job, and so that they try to forget this. But वो तो एक डर रहता है. But then you learn to live and overcome that fear.
Yes. So you cannot wish away that fear. What you do, you learn to live. Every day you try to overcome with a small amount of help from others, and live on with your life. Yeah, I think it's maybe spiritual, emotional, Oh yes, physical, everything works. everything. So spiritual part हम भूल जाते हैं. The जी. spiritual part is important. So as WHO defines health as a complete state of physical, mental and social well-being, and not merely absence of disease. So मैं इसके साथ spiritual well-being भी. Yeah. So that is a very important thing. Right. So if you have a good mental, emotional and spiritual well-being, that helps into reintegrate. डेफिनेटली डॉक्टर साहब, आपके कैंसर के ट्रीटमेंट लैंडस्केप में कौन सी नई एडवांसमेंट्स को लेकर आ रहा है होपफुली? सो कैंसर की रिसर्च बहुत जल्दी एंड वास्टली बढ़ रहा है. Okay. इनफैक्ट इन लास्ट 20 years इट इज़ इंक्रीजिंग लाइक यू अनइमेजिनेबल स्पीड. So it's very difficult to pinpoint, but if I have to look for a purely research and academic perspective, I think targeted therapy, immune checkpoint inhibitors, precision medicine and gene editing, जो आजकल हम CRISPR करके एक मेकनिज्म है जिसमें हम डिजीज जीन को हटा सकते हैं, स्पेशली इन हेरिडिटरी. Wow. Yes, so it is being relatively new. And we are also looking at early detection of cancer by circulating tumor cells, circulating tumor DNA. There is also a treatment called CAR T cell or chimeric antigen T cell receptor, जिसमें भी हम बहुत सारे कैंसर्स की इलाज कर रहे हैं. Okay. बट देखिए, ये था तो लेटेस्ट डेवलपमेंट. बट फॉर आवर कंट्रीज परस्पेक्टिव, what we need is a deeper penetrance into remote areas, for which I think telemedicine works in a big way. Use of artificial intelligence along with a physician integration can help us. AI can change, although it needs an human supervision always. But having said that, I think for our country, we need more access for the common people, for the village people, of a regular doctor. Most of the anti-cancer drugs, the common anti-cancer drugs, are quite cheap. So it is more important to disseminate the knowledge to people, Right. that it is treatable, curable, and that treatment should be available in district level, not in some big hospitals in some big cities where people have to spend thousands of rupees and thousands of kilometers actually to reach. Right. So I think while looking at all the important innovation Right. and wishing that they are available in real time in our country, we also should look at the dissemination of that knowledge to reach the last mile. डेफिनेटली. डॉक्टर साहब, क्या इंडिया में अवेयरनेस और टाइमली डायग्नोसिस बढ़ने लगा है या अभी भी लेट स्टेज डिटेक्शन ज़्यादा होता है? नहीं, डायग्नोसिस तो बढ़ने लगा है और अवेयरनेस बढ़ने लगा है. नाउ लाइक ब्रेस्ट कैंसर, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट 15 years back, we used to see mostly advanced stages cancer. Now we are seeing more and more people coming with early stages. And so awareness तो definitely बढ़ रहा है शिखा जी, पर we need to go more. Yeah. It's a large country with so many people, and somehow our health consciousness is less. Health budget is still a minuscule of the total budget. So as a society, I think we need to decide whether we need a bigger car or good health. Good health. I mean, that's not a comparison, but I think as a society we must understand what is really, really important and what is our priority. Because I think for every one of us, we are important, right? Things are not that important. Obviously, our health is important. And that's comes first, before any of the assets. So I think health and education are the two important pillars which should take priority of many other things. Right. That we need to decide as a society. Definitely. डॉक्टर साहब, आप यंग और मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑन्कोलॉजी चूज करना चाहते हैं? So I must tell them that choose this particular field of medicine if you really, really love it and you want to be someone. Don't choose it just because it can give you a quick fame or money. Right. Or
I mean, medicine is slightly different from other career, and oncology, it's otherwise quite demanding. And do not choose this if you are not sure that you want to do it. But once you embrace it, oh, it can give you a quiet satisfaction which only a physician can tell you. At the end of the day, sometimes you will be able to make some differences in some people's Somebody's life, yeah, positively. definitely. So that's a very, very rewarding career. Right. Dr. Sir, we have a small rapid fire round here. One myth about cancer you wish people would stop believing. Cancer is incurable. Wow. A quote or philosophy that defines your approach as a doctor. Two actually, one, and both are in Sanskrit. In Sanskrit there is a treasure trove, you know. Yeah. One is called Aturo Niyomo Nasti. A diseased person doesn't need to follow all the rules. There are no set rules. You must not put him in a straitjacket. And the second one I studied when I was in class 8. I studied Sanskrit, you know. Okay. It's called Mantre, Tirthe, Debe, Dvije, Brahmane, Bheshaje Guru, Yadrishi Bhavanajassa, Siddhir Bhavati Tadrishi. यानी कि मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, दवाई, इस सब में आपका सिद्धि लाभ तभी होगा जब आपको श्रद्धा रहेगा. So have respect for the medicine and doctors. Amazing. That was so impressive. Okay, so if you weren't a doctor, Dr. Sam, what would you be doing today? Most probably teaching history and Bengali literature in a school. And Sanskrit too. That I don't know. My knowledge of Sanskrit is limited. Okay. So one patient experience that changed your outlook towards life. So this man, he had a stage 4 colon cancer. Okay. And he was with me for the last 2-3 years. And he was really full of life. In fact, even on his last days, he was telling me, Dr. Saab, मैं आपको बाइक चलाना सिखाऊंगा, फिर हम दोनों मिलके लद्दाख चलेंगे. Oh wow. That hit you hard. That strong positivity of his life when he knew that he was losing it really changed me. Really, I still remember him, and I wish I have got the strength to carry on. As I told you, I learned much more from my patients. Definitely. I think somewhere what I believe is जब लोग अपने last stages में bed में होते हैं, when they are sure that like उनको कुछ नहीं होगा या उनका कुछ हो ही नहीं सकता kind of that, तो उनको सब चीज़ें वो याद आती हैं जहाँ पे वो सोचते हैं काश हमने ये किया होता, काश हमने वो किया होता. Yeah, I mean that's why I tell that जिंदगी में कुछ वो मत रखना कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाएगा. Just do it. Just do it. You just have the zeal and do it. Just do it. And ऐसा कोई नहीं है कि आपका इतना उम्र हो गया, लोग क्या कहेंगे. अरे लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ कहेंगे. कुछ तो लोग कहेंगे, वो भी हम ही कहेंगे तो वो क्या कहेंगे. Wonderful. Thanks a lot, Dr. Saab. Thanks a lot. It was a wonderful session today. Thank you, Shikha. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. डॉक्टर पांडा, आपका शुक्रिया इतनी क्लैरिटी, कंपैशन और डेप्थ के साथ अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए. दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अपना कैंसर से जूझ रहा है तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं. हेल्प, होप और हीलिंग सब रेडी है, सिर्फ सही गाइडेंस की ज़रूरत है. दोस्तों, दिस इज़ योर होस्ट शिखा सुराना साइनिंग ऑफ. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम एट द वाइटल वॉइसेस, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस एट YouTube and Instagram, and take care.